many anonymous users जो हैं, uh, yes, they use this dark web to for the illegal markets like drugs, weapons, and etc. Anything you can imagine. Dark web is the part of World Wide Web that allows users to remain anonymous. The dark web is the epicenter of illegal online activities, a vast secret cyber underworld where people can buy drugs, weapons, and anything you can imagine. The subterranean realm is sinister and untraceable with deadly consequences. However, it is not always used for illicit activities, and the problem does not come from technology itself, but rather from the ways in which people use it. So, I would like to present the opinion that dark web is corrupted and illegal because the of how people use it, and it's not because just because of the technology we are using. Now, moving forward to the different parts of internet. The different parts of internet can be defined into three categories, that are surface web, the web we are the web that the vast majority of internet users are accustomed to. um, it is accessible in any nation that does not block internet access, even uh, places like China and Egypt. So जो भी हम लोग एक्सेस कर पाते हैं, like Google Chrome, in Facebook, Wikipedia, etc., जो हम डेली लाइफ में विदाउट एनी डिफिकल्टी यूज कर पाते हैं, एक्सेप्ट इन कंट्रीज लाइक चाइना, जहाँ पे कुछ साइट्स ब्लॉक्ड है और कुछ सोशल मीडियाज भी बैंड है, जो डेली यूज में हम यूज कर पाते हैं, दैट इज surface level web. Now, going further to deep web, this is the portion of internet that's hidden from the conventional search engines, and it contains unindexed website. ये वो लेवल ऑफ वेब है जहाँ पे जो हम गूगल क्रोम या नॉर्मल हमारे सर्च इंजन से सर्च नहीं कर पाते. Here we can find personal information like payroll and medical records or corporations' private data. So it is a little deeper level of web जहाँ पे जो हम नॉर्मल वेब इंजन से सर्च तो नहीं कर पाते हैं, बट इट इज नॉट दैट डार्क, एंड यहाँ पे इतने इलीगल एक्टिविटीज नहीं हो पाती. Now, going further to dark web, here sites are intentionally hidden from search engines. Sites in the dark web can only be accessed through special browsers, which is masked IP address to hide the identity of the visitors. So, यहाँ पे विजिटर्स की आईडी और आईपी एड्रेसेस हाइड किए जाते हैं, एनक्रिप्ट किए जाते हैं, ताकि वो एनोनिमस रहे और वेरियस तरह से वो अपना जो भी डील्स एंड ऑल कर सकते हैं. नाउ मूविंग फर्दर टू ओरिजिन ऑफ डार्क वेब. In 1969, a couple of university students sent the world's first computers to complete a message. It was sent on ARPANET, an early ancestor to internet. This is how the internet started. Ever since there has been the internet or any form of internet, people have used it for illegal online activity. In fact, one of the first ever e-commerce transaction was a drug deal in 1970 between two students of MIT and Stanford. In 1980s, people also attempted to create data havens in small countries with relaxed laws. These early examples are nowhere near sophisticated as the modern dark web, but proves the point how people want to be anonymous and authorities. So this shows that people want internet to be anonymous and use it for illegal activities like drug dealing or or selling weapons or selling various datas. This is how the origin of dark web started. Now, in mid 1990s,
technology called Tor was created. Tor stands for the onion router, discussing more in depth about this in the next slide. Moving forward to the onion router. The onion router or Tor is browser called which allows user to exchange information anonymously online. Tor was invented by US Naval Research Laboratory to allow intelligence personnel to transfer information securely. Another agency of the US Department of Defense called DARPA further developed Tor, and in 2002 they made it available to public, and to this very day Tor is still funded in the part by the US government. The idea was to make it difficult for anyone to decipher which information was created by the intelligence officers. Putting it simply, the more users, the better is the chance to remain anonymous. So, यहाँ हमें पता चलता है कि टॉर एक ऐसा ब्राउजर था जो यूएस नेवल के द्वारा बनाया गया था और ये इसलिए बनाया गया था ताकि जो यूएस नेवल है वो सारे जो मैसेजेस है या जो भी डेटा है वो एक एनक्रिप्टेड रूप में पास करे और इसको फिर पब्लिक कर दिया गया था और ये इसलिए किया गया था ताकि जितने यूजर्स हो उतना ही इनके चांसेस एनोनिमस होने के बढ़ जाए और इस तरह से टॉर एंड दिस इज हाउ टॉर वाज क्रिएटेड. Moving further to more points about Tor and how it works. Tor is a peer-to-peer network like Tor. Tor are the backbone of dark web. For the dark web to exist, its anonymity. Tor एक voluntary run system है जो help करता है इंटरनेट को more anonymously use करने के लिए. We reach our destination by bouncing on different IPs, hence traffic is read out from different places. Traffic is encrypted multiple times or different servers through different servers, and this server is known as nodes or relays. As it is voluntary run system, anyone can voluntarily create node or on their systems. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि टॉर एक ऐसा ब्राउजर है जहाँ पे जो यूजर है वो बाउंस करते वो कनेक्शन का जो आईपी है वो डिफरेंट सर्वर्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब हर एक सर्वर और नोड्स और रिलेज या ब्रिज से अपना जो भी डाटा है हर लेवल में एनक्रिप्टेड रूप में उसको बाउंस करते हैं ताकि उनके जो आईपी एड्रेसेस है और उनके जो डेटा है वो एनक्रिप्टेड रूप में रहे और किसी को उनका डेटा या ये आईपी एड्रेस पता ना चले और इसी तरह से टॉर वर्क करता है और इसी तरह से ये जो टॉर है वो एनक्रिप्टेड रूप में अपने डेटा और उस आईपी एड्रेस यूजर के आईपी एड्रेस को रखता है और डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है और इसीलिए ये जो वेरियस लेयर्स है जो वेरियस लेयर्स जहाँ से ये डेटा सेंड होता है इसके कारण इसको ऑनियन कहा जाता है द ऑनियन राउटर. It is important to note that without Tor, the darknet would still exist. Tor is simply one of the dark browser to which there are many. मतलब द अनियन राउटर सिर्फ एक ब्राउजर और ऐसे बहुत सारे ब्राउजर हैं जिसके थ्रू हम डार्क वेब अप्रोच कर सकते हैं. लाइक अगर गूगल क्रोम कल को शट डाउन हो जाएगा तो भी कई सारे ब्राउजर्स रहेंगे जो हमें सरफेस वेब पे अलाउ कर सकते हैं. इसी तरह से टॉर भी है. दिस इज वन सिंगल ब्राउजर और ऐसे और भी बहुत ब्राउजर्स हैं बट ये एक मेन ब्राउजर है जिसके थ्रू हम डार्क वेब को अप्रोच कर सकते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू मोर फैक्ट्स अबाउट डार्क वेब. In 2014, Dr. Gareth Owen provide a breakdown of sites in dark web. His research found that drug marketplaces were most common type of site, followed by fraud sites and Bitcoin sites, which are mainly used for money laundering. In 2001, study
done by the University of California discovered that dark web had 7.5 petabytes or 7,500 gigabytes of information, and in 2 years this number increased to over 91,000 petabytes. Today, combined the deep web and dark web is over 96% of the entire web. 60% of the largest deep websites collectively exceeds the size of entire surface internet by 40 times. तो देखा जाए जो हम surface level पे सर्च कर रहे हैं, that is only 0.03% of entire web. हमें कई चीजें अभी भी नहीं पता है because they are hidden in deep and dark web, and it can only be accessed through various browsers and various routers which cannot be accessed ordinarily. So यहाँ पे हमें ये चीज पता चलती है. Now moving forward to the conclusion, a lot of people regard that the dark web as is an underworld, an illegal and dark place where criminals meet, which is true that there is lot of this type of activities. But the other argument is that it gives people freedom. It can stop governments from overreaching their boundaries. It can keep people and their ideas safe. The real aim is to stop the parts of dark web that should not exist. सर, तो यहाँ पे दिया गया है कि डार्क वेब में बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, बट कई इंफॉर्मेशन, कई चीजें जो कंट्रीज के बारे में हमें नॉर्मली नहीं पता चलती हैं, जो गवर्नमेंट खुद छुपाती है, जो स्कैम्स रहते हैं, वो कई चीजें, ऐसी चीजें हमें इसी से पता चलती है. और इसलिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी में. इसलिए डार्क वेब नेसेसरी है, but we have to stop the illegal activities that is going on in the dark web and deep web collectively. Now, a word of warning. People should know what they are getting into before accessing the dark web. It is definitely recommended to not mess with dark web, as there have been reports of people getting strange phone calls, webcams being hacked, being followed around in public, and seeing photos of themselves while doing their daily activities on their computer after browsing dark web. So this is the word of the warning, and here I would like to conclude my presentation. Thank you, sir. नीरज से पूछो. मोड ऑफ ट्रांजैक्शन क्या हो रहता है अगर अपन कुछ डील करते हैं डार्क वेब में? सर, क्वेश्चन समझ में नहीं आया. अगर जैसे इलीगल एक्टिविटीज होती हैं डार्क वेब में, तो उसमें कोई ना कोई तो मोड ऑफ ट्रांजैक्शन होता होगा. क्या ट्रांजैक्शन? हाँ, बिटकॉइन के द्वारा, बिटकॉइन के थ्रू इसका. सर, एको हो रहा है. हाँ चलो बोलो. यस सर. सर, ये अभी तक एक मिस्ट्री है. ये बहुत लोगों के एक्सपीरियंस है. या तो वो कभी ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है. ये बहुत मिस्टीरियस वे में वर्क करता है. या आप बिटकॉइन के थ्रू भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, और इसी तरह से ट्रांजैक्शंस होते हैं और डील्स होते हैं और वेरियस. हेलो सर. सर, ठीक है. एको हो रहा है. यस सर. ठीक है, तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा. सबसे इम्पोर्टेंट थैंक यू. चीज तो यही है कि आपका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन इज वेरी गुड. कोई प्रॉब्लम नहीं है. और सबसे थैंक यू. मोस्ट इम्पोर्टेंटली वी आर ऑल हैप्पी दैट you are the first presenter of this MCA first semester presentation. ठीक है. और आपने हिम्मत करके थैंक यू प्रेजेंटेशन दिया, सर. तो आपके अंदर वो जो ये बोलते हैं ना एंथुजियाज्म, और जो अपने आप को इंसिस्ट करना या एक्सपीरियंस होना, तो आपको कैसा लगा प्रेजेंटेशन देने के बाद? सर, बहुत नर्वसनेस थी और मैं थोड़ा रुक भी रही थी, पर रिसर्च करने में मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत नए इंफॉर्मेशन मिले, लाइक द अनियन राउटर के बारे में, और कैसे सर्वर वर्क करते हैं, कैसे नोड्स और रिलेज वर्क करते हैं. वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. रिसर्च वॉज वेरी फन, बट प्रेजेंटेशन के टाइम पे और एग्जीक्यूशन के टाइम पे थोड़ा नर्वसनेस थी मुझे बहुत, और मे बी ओके शायद फाइन. इसलिए वो थोड़ा इफेक्टेबल हो लास्ट गया. क्वेश्चन.
लास्ट क्वेश्चन ये है कि Yes, sir. प्रेजेंटेशन देने के पहले आप कितने परसेंट कॉन्फिडेंट थे, और प्रेजेंटेशन के बाद Uh, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अब क्या हो गया? सब पहले तो मैं बहुत नर्वस थी, इसलिए 50-50 था कि मतलब ठीक होगा कि नहीं, और हाँ, अभी आई एम क्वाइट पॉजिटिव आफ्टर गिविंग द प्रेजेंटेशन. ओके फाइन। सो आपने, आपका यही कहना है कि 50-50 यानी 50% आप कॉन्फिडेंट थे कि आप कैसे प्रेजेंटेशन यस देंगी और सर. कैसा रहेगा। अब आप कॉन्फिडेंट हो कि यस सर. अब आप नेक्स्ट हाँ. प्रेजेंटेशन जब दोगे तो उसमें आपको 80 हाँ. टू 90% यस सर. कॉन्फिडेंट रहेगा कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा जाएगा। आई थिंक सो। यस सर. यस सर. ओके, एग्जैक्टली. दिस इज द स्पिरिट, यही है आपका मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर मोटिवेशन। जब तक आपको खुद से यस सर. मोटिवेशन नहीं आता है, यानी एक ही तरीका होता है कि आप खुद से कुछ करो, देन यू गेट योर ओन सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, चलिए। यस सर. ओके यस सर. रीना, थैंक यू थैंक यू सर. फॉर दिस थैंक यू सर. प्रेजेंटेशन। एंड यस सब सर. लोग एक बार ताली बजा दो।